Balochistan, Pakistan's largest yet most restive province, has long been marked by allegations of enforced disappearances, human rights abuses and a decades-old insurgency. The sentencing of prominent Baloch rights activist Dr. Mahrang Baloch has reignited international concern, with rights groups and nationalist organizations describing the verdict as politically motivated and a blow to democratic freedoms. The decision has also sparked widespread protest and a province-wide shutdown, further escalating tensions in the region. A report. आपने आज तक ये सवाल जो है ना आप में से किसी ने भी नहीं देखा कि बलोचिस्तान के साथ में चल रहा है। असद बलोच को। Balochistan has remained at the center of Pakistan's internal conflict for decades, with recurring allegations of enforced disappearances, extrajudicial killings and restrictions on political dissent. Human rights organizations have repeatedly expressed concern over the shrinking space for peaceful political activism and the use of anti-terrorism laws against activists and critics of the state. बलोचिस्तान के वसाइल की लूटमार के लिए बलोच नस्ल कुशी की गई है। Against this backdrop, one of the most prominent Baloch rights campaigners, Dr. Mahrang Baloch, has been sentenced to life imprisonment by an anti-terrorism court. She and fellow activist Sibghatullah Shahji were convicted on charges of murder and terrorism in connection with the killing of a paramilitary soldier during a protest in Gwadar in 2024. According to prosecutors, the two incited a mob that fatally attacked paramilitary soldier Shabir Ahmed. However, Dr. Mahrang Baloch was arrested in March 2025 while participating in what supporters described as a peaceful sit-in protest in Quetta. Her supporters and rights organizations have rejected the verdict, arguing that the case is politically motivated and intended to silence peaceful dissent. They have also questioned the fairness of the judicial process, alleging that the cases against detained members of the Baloch Yakjehti Committee were abruptly fast-tracked through jail court proceedings and so-called faceless trials conducted via video link. According to them, repeated adjournments coupled with what they describe as pressure from prosecutors to secure convictions created the impression that the outcome had been predetermined. जिस तरीके से बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार क़यादत के केसेस में अचानक से तेज़ी लाई गई, जेल कोर्ट से लेकर फेसलेस ट्रायल्स तक और फेसलेस ट्रायल में वीडियो लिंक के ज़रिए बार बार हेयरिंग डेट देना और अदालत की जानिब से जो एक फ्रस्ट्रेशन, एक बेचैनी है, वो वाज़ेह थी। और जिस तरीके से प्रोसिक्यूटर का बार बार इस बात पर जोर देना कि ट्रायल किया जाए और इनको कन्विक्ट किया जाए, तो इस बात पर हमें बखूबी अंदाज़ा था कि ऊपर से आए गए अहकामात अदालत को मिल चुके हैं और अब जल्द अदालत अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कार्रवाई करेगी। कल यानी 22 जून को ATA में जिस किस्म की गैर मुनसिफाना सज़ा हुई है, वो हम समझते हैं कि ना सिर्फ फेयर ट्रायल के ऊपर बल्कि इस मुल्क के आइन और कानून का भी जनाजा है और ये तारीख का एक स्याह तरीन बाब बनकर रहेगा। जिस FIR को जो खुद मुतनाज़ा है, जिस FIR के ऊपर जो कत्ल का FIR है, उस पर 2 मुतज़ाद FIRs बनाए गए हैं, जहां पर एक शख्स को 2 अलग अलग तारीखों में कत्ल करने का मुकदमा बन चुका है। सबसे पहले ये खुद वाज़े करती है कि ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। The verdict has intensified political tensions across Balochistan, with activists warning that the sentencing reflects a broader pattern of suppressing peaceful political mobilization in the province. Supporters of Dr. Mahrang Baloch argue that imprisoning prominent leaders will not diminish demands for justice, accountability, and an end to enforced disappearances. Instead, they say the ruling is likely to deepen public resentment and strengthen the resolve of those campaigning for political and human rights.
اتنے عرصے سے آپ گزشتہ 75-76 سالوں سے یہی کرتے آ رہے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے ہیں. آج بھی جو عمل آپ نے دہرایا ہے, جس قسم کی ایک ناانصافی آپ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کے ساتھ کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ شاید اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی ایک بہت بڑی کم عقلی اور بیوقوفی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مہرنگ کو جیل میں ڈالنے سے آپ نے پرامن آوازوں کو قید کیا ہے, اور آپ پرامن جو جدوجہد کی کانسیپٹ ہے آپ اس کو ختم کر کے آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی کم عقلی ہے, نہ کہ آپ کی سمجھداری. اور جہاں تک مہرنگ بلوچ کی بات ہے, مہرنگ بلوچ کی جو جدوجہد ہے وہ نہ صرف BYC کے تھرو بلکہ ہر اس بلوچ کے توسط سے یہ جدوجہد جاری رہے گی. آپ نے مہرنگ بلوچ کو جیل میں ڈال کر یہ واضح پیغام دیا کہ آپ نے جو ان آوازوں کو قید کیا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو جدوجہد ہے وہ جیلوں میں ڈالنے سے ختم نہیں ہوتی. The verdict has also drawn strong condemnation from Sindhi and Pashtun rights organizations. In response, the Baloch Yakjehti Committee called a province-wide shutdown across Balochistan, with widespread participation as markets and businesses remained closed in several areas. The sentencing has once again brought international attention to allegations of enforced disappearances, arbitrary arrests, and restrictions on political dissent in Balochistan. The latest developments come amid continuing unrest, with nationalist groups accusing Pakistani authorities of using security laws to suppress political activism, while the government says the measures are necessary to combat militancy and maintain law and order.